टेक प्रिपरेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसडीएलसी का प्रोसीजर क्या होता है कि एसडीएलसी में रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। इसमें से हमने रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी को कवर कर लिया था डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगा डिजाइन से। डिजाइन एक्चुअली क्या होता है, डिजाइन के बारे में। इसके लिए पहले once after the feasibility study is done, we go for the design. It is done by architecture or technical architecture. So it has two types. So high level design and low level design. Mainly architecture and technical architecture. दो टाइप की डिजाइन करते हैं, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन मीन्स if any user opens this, for example, if any user opens the browser and enter URL www.facebook.login.com, should be displayed this type of this. Okay, so this is the high level design, and each and individual is a low level design. Like for example, let's okay, and if we take an application as example, designing main module application is called as high level design. Main module means high level design like compose. Now taking example as Gmail, compose, inbox, send item, outbox, draft, and all mail are the high level design. And low level design, suppose that in compose that there is option to and from CC, VCC, and sub and different type of message, send button file, each and individual means a low level design. Here is also, if you take an application and example, designing each and every individual module in detail is called as low level design. So once after the designing, then we go for the coding. Okay, so coding, once after the designing, we go for the coding, and it is done by the senior, junior, and fresher developer. So critical feature will be assigned to senior developer, and a major feature assigned to junior developer, and minor feature assigned to the fresher developer. So critical feature means just for example features like compose, inbox, send item, attachment, login. And the major feature is basically spam, draft, outbox, and all mail and trash. And minor features like a help but and calendar and about that. So once after the coding, we go for the testing. So here, once after the coding, we go for the testing, and it is done by same senior, junior, and fresher test engineer. So critical feature will be assigned up to senior test engineer. Major feature will be assigned up to junior test engineer, and minor feature assigned up to fresher test engineer. So test engineers only will be testing the application by entering all the possible value and according to the requirement and given by the customer. Okay. So it is it. So once after the testing, we go for the installation. If software quality is good, then we go for the installation. It is done by installation engineer, field engineer, site engineer, implementation engineer, and IT engineer. IT engineer will go to the customer place and set up the environment and then install the actual software. After that, he will give a demo to this software, the software to the customer. Means he will provide the demo, how it works, everything about the software. And if customer has any doubt, if customer feeling any doubt, then
software regarding software, then test engineer clear any doubt of the customer. Means set up the environment means like a OS, console version and server, web server, app server, database, पूरा का पूरा install करो, then actually ये software होता है. So at the end last point है maintenance. SDLC का last point है maintenance. यानी कि once after the installation is done, customer is start using the software. If the customer is finding any defect, then software company will fix the defect free of cost for a certain time of period. That period of time is called as maintenance period. After the maintenance period, if customer is finding any defect, means after the maintenance period is over, if customer is finding any defect, then software company will fix it, but they will charge. There will be charge. Like this is the maintenance period. So suppose that is 1 year of maintenance period, and if customer is finding in this period any defect, then free of cost, software company will fix the defect. But after the maintenance period, if customer finding any defect, then nicely charged by the. Then who will involve? The question is who is involved in maintenance? Okay, the same developer and test engineer who are there in the project will be involved in the maintenance, and count will be less because the customer asking for a small change like add some feature or modify some feature or delete some feature. Okay, and this is all about the SDLC process. Okay, let's recap once again. So this is complete video for the SDLC. So if your interviewer asks you what is the SDLC, so first you have to tell the uh, definition, like it is a step-by-step procedure or standard procedure to develop the software or new project. Then you have to tell the procedure of SDLC and detail each सेक्शन इन डिटेल लाइक यार रिक्वायरमेंट कलेक्शन फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है डिजाइन क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है देन आपको ये बताना टाइप ऑफ एसडीएलसी नहीं भी हमारे पास एसडीएलसी भी ये सब मॉडल है इन सब के नाम बताना फिर अगर इन सब के डिटेल्स इंटरव्यूअर पूछता है तो आप इन सब के बारे में डिटेल्स बता सकते हैं ठीक है जैसे एजाइल मॉडल क्या होता है कोई भी मॉडल पूछो तो इसके बारे में डिटेल मैं आपके आने वाली वीडियो में ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये सब मॉडल कैसे काम करता है क्या होता है तो अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें से छोटे छोटे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि वाटरफॉल मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है स्पाइरल मॉडल कोई भी मॉडल के बारे में पूछ सकता है या फिर बीए कौन बन सकता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलजीएलसी के मॉडल के बारे में डिटेल इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होगा एजाइल मॉडल क्योंककि आज कंपनियों में एजाइल मॉडल 90 to 95% कंपनी आर यूजिंग एजाइल मॉडल ये क्यों इम्पोर्टेंट है और बाकी सब मॉडल में ये प्रीवियस मॉडल में क्या ड्रॉबैक है हम ये सब भी देखेंगे ये सब भी पूछा जाता है कि जनरली क्या होता है तो इसका पूरा का पूरा मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैनुअल टेस्ट के साथ एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं अगर आपने कोई वीडियो समझ में ना आया तो कमेंट भी कर सकते हैं तो उसको हम दोबारा से देख लेंगे ठीक है तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिटेल में कर लिया ठीक है नेक्स्ट जो हम इसके बाद वाटरफॉल मॉडल के बारे में क्यों वाटरफॉल वाई द मॉडल इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल ही क्यों कहते हैं क्योंकि once after the feasibility study is done means after the feasibility study we freeze the requirement means cannot change the requirement we 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 can't go back and change the requirement यानी कि back tracking is not possible that is the reason this
model is called waterfall model because water cannot flow the backward direction. Means water always flow from higher to lower. That's why it is also that after the feasibility study, we freeze the requirement. Means the requirement cannot be changed. That is why it is called waterfall model. And why we freeze the requirement? हम ये जानेंगे freeze the requirement क्यों करते हैं? ठीक है? We freeze the requirement because if the requirement changes, obviously the design changes, and if the design changes, code has to be changed. And if the code changes, there will be a lot of defect in the application. Means while changing the feasibility study will change the many things. So that's why in the waterfall model, this is the one first model, and we SDLC the first model. In that time, we are phrasing the requirement. That's why it's in waterfall model. And why customer want to change the requirement? This is the most important question because of competition in the market, because many things in the market, so customer want to change the requirement. As as on when the business changes, supporting software should be changes. Mean customer sometimes different type different type के बिजनेस चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से या कुछ इन्वॉल्वमेंट करते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए नए नए एडिशन करते रहते हैं जिसकी वजह से उनको सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को भी चेंज करना होता है इसलिए रिक्वायरमेंट को चेंज करने की जरूरत है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत टाइम लग सकता है तो नई टेक्नोलॉजी के लिए ही जो है रिक्वायरमेंट जो है चेंज करना पड़ता है ये तीन पॉइंट है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वाटरफॉल मॉडल जो जैसे कोई भी मॉडल पूछा जाता है तो उसमें सारा जो प्रोसीजर है आपको यही बताना है मीन्स ये सारे प्रोसीजर यही है जैसे कि अगर वाटरफॉल मॉडल है तो भी यही प्रोसीजर बताना है रिक्वायरमेंट कलेक्शन फिजिबिलिटी स्टडी डिजाइन तो वाटरफॉल मॉडल में बस ये डिफरेंस रहेगा कि यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद ये फ्रीज कर देते हैं रिक्वायरमेंट ठीक है फ्रीज कर देते हैं रिक्वायरमेंट फिर हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते सो ये हो गया वाटरफॉल मॉडल के बारे में सो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको लोगों को समझ में ना आ रहा है तो कोई भी चीज आगे आप कमेंट कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग में फिर से वीडियो बना दूंगा ठीक है थैंक यू